आज का टॉपिक है नंबर ऑफ डिवाइडर्स ऑफ ए कंपोजिट नंबर्स। चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, सभी छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट है। हम शॉर्टकट में बता रहे हैं। लेट n is a positive integer, positive integer greater than 1, greater than 1. Let n is equal to a to the power p, b to the power q, c to the power r, where a, b, c are distinct prime numbers and p, q, r are positive integers, then number of divisors is equal to p plus 1 into q plus 1 into r plus 1। बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। पहले हम एक छोटा एग्जाम्पल लेकर दिखाएंगे, उसके बाद फिर बड़ा प्रॉब्लम लेंगे। नंबर ऑफ डिवाइडर्स इज इक्वल टू p plus 1 into q plus 1 into r plus। जैसे फॉर एग्जाम्पल find the total number of divisors of 12। छोटा नंबर लिए है, आप वेरीफाई भी कर लीजिएगा। 12 कैन बी रिटन एज प्राइम फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 2, 3। 12 can be written as 2 square into 3। Here a is equal to 2, b is equal to 3, p is equal to 2, q is equal to 1। यहाँ पर केवल दो ही टर्म आया, a to the power p into b to the power q। Here p is equal to 2 and q is equal to 1। The number of divisors, therefore, number of divisors is equal to p plus 1। Here p is equal to 2, so 2 plus 1 into q plus 1, q is equal to 1 plus 1, that is equal to 3 into 2 is equal to 6, that is answer। Total number of divisors of 12 is equal to 6। ये तो छोटा नंबर हम लोग ऐसे भी निकाल के चेक कर सकते हैं।
प्रैक्टिकली भी देख रहे हैं डिवाइडर्स ऑफ 12 क्या क्या हो सकता है। पहले 1 2 3 4 6 12 वेरीफाई कर रहे हैं केवल मेरा रिजल्ट करेक्ट है या नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 अरे टोटल नंबर ऑफ डिवाइडर्स इक्वल टू that is equal to therefore total number of dividers is equal to 6 1 2 3 4 5 6 ये हम प्रैक्टिकली निकाल के बताए हैं और यहाँ पर फार्मूला से निकाले। तो ये तो छोटा नंबर था 12 इसलिए हम लिख कर बता दिए। अगर बहुत बड़ा नंबर दे दे तो उसका लिखना संभव भी नहीं होगा। Find the total number of divisors of 24 60 144 360 5076 5 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। 24 अभी जो प्रोसेस बताए पहले 24 का निकालेंगे प्राइम फैक्टर। फर्स्ट 24 12 डिवाइड बाय 2 6 3 24 can be written as 2 into 2 into 2 into 3. 24 can be written as 2 into 2 into 2 into 3. That is equal to 2 to the power 3 into 3 to the power 1. Here A is equal to 2, B is equal to 3, P is equal to 3, Q is equal to 1. The number of dividers is equal to 3 plus 1 into 1 plus 1. That is equal to 4 into 2 is equal to 8. आप चेक भी कर सकते हैं। Total number of dividers of 24 is equal to 8. Now we have to find the total number of dividers of 60. Second question. Second question is we have to find the total number of dividers of 60. Now find first of all prime factor of 60. Divide 60 by 2, 30. Divide 30 by 2, 15. Divide 15 by 3, that is 5. 60 can be written as 2 into 2 into 3 into 5. That is equal to 2 square into 3 into 5. Here A is equal to 2, B is equal to 3, and C is equal to 5, P is equal to 2, Q is equal to 1,
and r is equal to 1. The number of divisors is equal to 2 plus 1, 1 plus 1 into 1 plus 1, that is equal to 3 into 2 into 2, that is equal to 12. Total number of divisors of 60 is equal to 12. Now third question, we have to find the total number of divisors of 144. First of all, find prime factor of 144. Divide 144 by 2. 72. Again divide 72 by 2. 36. Divide 36 by 2. 18. Divide 18 by 2. 9. Divide 9 by 3. So 144 can be written as 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3, prime factor. 2 repeated 4 times, that is equal to 2 to the power 4 into 3 square. Here A is equal to 2, B is equal to 3, P is equal to 4 and Q is equal to 2. Therefore, number of divisors is equal to 4 plus 1, power में 1 ऐड करते into 2 plus 1, that is equal to 5 into 3 is equal to 15. Total number of divisors of 144 is equal to 15. आप प्रैक्टिकली भी चेक कर सकते हैं, बहुत शॉर्टकट तरीका है. नाउ फोर्थ, वी हैव टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिवाइडर्स ऑफ 360. बढ़ाते गए हैं नंबर. तो 360 divide, find prime factor of 360. Divide 360 by 2, that is 180. Again divide 180 by 2 is equal to 90. Divide 90 by 2 is equal to 45. 3. Emergency light